खड़े हो जाते हो, कृपया बैठकर कथा सुनो। ये कोई नाचने का कि कोई दूसरा कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, ये तो भगवत कथा है। बीच बीच में क्या है कि कथा में थोड़ा मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा ऐसा भाव बदल गया है, तो थोड़ा मैं नचा लेता हूँ, तो तुम्हारा मन जो है ना वो फिर बैठ जाए कथा में। किसी का मन खेत में, किसी का मन पंडाल में, किसी का मन इधर, किसी का मन किधर, वो मन तुम्हारा कथा के बाहर चला जाता है। इसलिए बीच बीच में मैं कीर्तन कराता हूं, तो तुम्हारा मन भागवत कथा की ओर आ जाए, और नाचने से तुम सब भूल जाते हो। जो नाचते हैं वो हरि को पाते हैं। मीराबाई नाची। मीरा कहती है, राणा कुटुंब में जन्म, राज कुटुंब, राज घराना, क्षत्रिय कुल में राज घराना, और राणा जी के साथ ब्याह हुआ, लेकिन उनकी भक्ति बाल्यावस्था में मिल गई थी। मीराबाई ने बालपण में भक्ति मળી। छोटी सी मीरा जरूखे में बैठी है अपनी मां के साथ, और ब्याह का समय था। जरूखानी आगळ थी एक जान निकली, वरघोड़ो निकल्यो। दुल्हा घोड़ा के ऊपर बैठा है। वरराजो जो कहे ना, वरराजो आपने अहियां लाडो के, लाडो घोड़ा ऊपर बैठो है और निकल्यो। बैंड बाजा। मीराबाई ने देखा, उनकी माता को बुलाए, दाता। हाँ मीरा, मां मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? बेटा ये ब्याह है। अच्छा, मेरा भी ब्याह कराओ। अरे बेटा तू तो छोटी है, ये बड़े लोगों का ब्याह होता है, जिसकी उम्र हो जाती है। बोले नहीं, मुझे ब्याह करना है। मानी पासे हट पकड़ी मीराबाई, मां मने लगन कराओ। मीराबाई ने जो मां थी ने, बहुत भगवान की पूजा भक्ति वाली थी, सत्संगी थी। अपने निज मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखती थी। वो मूर्ति लाई, लो मीरा। बोले ये कौन है? बोले ये तुम्हारा पति है। सच? बोले हाँ सच, तुम्हारा ये पति है। और मीराबाई ने मान लिया कि मेरी मां ने कहा है कि मेरा पति है, तो बस आज से मेरा पति। देखो मेरे भाई, भक्ति का रंग तो कभी भी चढ़ जाता है, लेकिन कोई सद्गुरु मिलना चाहिए, कोई सद्गुरु का हाथ होना चाहिए। हम तो कई लोग बोलते हैं कि भाई ये तो महात्मा लोग हैं, इधर किधर जाते आते रहते। नहीं, वैसे कोई महात्मा कोई आने जाने वाले नहीं है मेरे बाप। ये महात्मा जो बैठे कोई सामान्य नहीं है, ये हमारे संसारी लोगों का भला करने के लिए वो बैठे हैं। आजकल तो घना लोग कहे ना, बाबाओने तो मजा है, ये मजा नहीं सजा है। अब बाबा लोग छे, हूँ गुजराती में कहूं, तमारा घरे आवे ने तमे अमने भेट पूजा करो એટલે તમને એમ થાય કે આહા હા, બાપજીને તો 10,000 રૂપિયા આપ્યા છે, બાપજી તો લહેર કરશે। લહેર કરવા નથી આવ્યા। એ 10,000 રૂપિયા તમે બાપજીના પગે મૂકો ને, એ રૂપિયા નથી લેતા, એ તમારું પાપ લઈ જાય છે। અને એ મહાત્મા છે ને, એ પછી મંદિરમાં જઈને 5 માળાઓ આમ ફેરવશે ને, તો તમારા કરેલા પાપોનો ઢગલો છે ને રાખ થઈ જશે મારા બાપ। આ મહાત્માઓ એના માટે છે, તમારા રૂપિયાની મહાત્માને કઈ પડી નથી। विचार करो, हमारे रूपभारती जी महाराज के पास थोड़ा सा पैसा बचा, भंडारा कर दिया। हाँ? और लोग कहते हैं कि महात्माओं को पैसा की क्या जरूरत है जरूरत। ऐसा धर्म कार्य करने के लिए है मेरे बाप, जरूरी है।
दिन में तुम 400-500 रुपया वैसे शराब में पी के बोतल फेंक देते हो, तो ये तो परमार्थ का कार्य में काम आता है मेरे बाप। हाँ, ये तो परमार्थ में है। बीज रोपो, सारी जमीन में वावो। अच्छा खेत में जो अच्छा बीज का रोपण करो ने तो अच्छा बीज आता है। पण खारा पाट में जो तमे बीज वावो ने तो कई न उगे मारा बाप। एम पात्र जोई ने आवी जग्याए ज्यां धर्मनी ज्यां धजाओ फरके छे, जे महात्माओ आवा आवा सारा कार्यों करी अने लोकोने परमार्थना मार्गे लई जाय छे ने, त्यां तो मारा बाप जेटલું बने એટલું ઓછું છે। આવી જગ્યાએ કંઈક આપજો, તમારા પાપ દૂર થઈ જશે મારા બાપ, તમારી પેઢી તરી જશે। રાજા પરીક્ષિત જેમ કાષ્ટમાંથી અગ્નિ પ્રગટ થાય એમ પરીક્ષિત મહારાજ પ્રગટ। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों ने बोलाव्या छे। ब्राह्मणों आवी अने बाळकना भविष्य कथन कर्या छे। ये ब्राह्मण जो शब्द है ना मेरे बाप, विप्र शब्द, भूदेव शब्द, ब्राह्मण, वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु। चारे वर्ण का जो गुरु है ना वो ब्राह्मण है मेरे बाप, द्विज है। और भगवान ने तो पुरुष सूक्त में बोला, ब्राह्मणोष्य मुखमासीत, ब्राह्मणोष्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः, ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदव्याघ्रो शूद्रो अजायत। भगवान कहते हैं कि मेरा जो मुख है ना वो ब्राह्मण है। शरीर जो है ना वो भगवान का मंदिर है। कोई अच्छी गाड़ी लाते हैं घर में 20,000 20 लाख की, मान लो इनोवा तुमने खरीदा, अच्छी गाड़ी में आप अच्छा डीजल डलवाते हो, केरोसिन डालते हो, तो ये भी एक भगवान की गाड़ी है मेरे बाप। और इस हरि की जो गाड़ी है, शरीर रूपी जो गाड़ी है ना, उसमें ईंधन भी अच्छा डालना चाहिए, शराब जैसा ईंधन न चाहिए। गुटखा रूपी ईंधन दूर कर दो मेरे बाप। पीना हराम है, पीलाना हराम है। पीऊं ये पण पाप छे अने कोईने पाऊं ये पण पाप छे। पीवो, हरिना नामनो रस पीवो। पीना हराम है, पिलाना हराम है, लेकिन पीने के बाद होश में आना हराम है। पीवो, जिंदगी भर न उतरे। 50 के 100 रुपया नु लाई अने तमे पीवो अने कलाक में उतरी जाए अने पीधुं केवराय। सवार में तमे 2 के 4 वाटकी अमल पीवो अने बपोरे उतरी जाए अने पीधुं केवराय। आ तो बधु नकामू छे। पीने जैसा जो है तो भगवान का, हरि का नाम का रस मेरे बाप पीवो। जिंदगी भर उतरे नहीं। मीरा ने पिया, नरसिंह मेहता ने पिया, एवो पीवो। 2 वाग्या पछी उतरी जाए पछी बंधणीओ के पग तूटे छे, आ पीधुं कहेवाय? आ तो शरीर बगाड़वानी वातो छे मारा बाप। मीराबाईए पीधुं अने मीराबाई भगवान कृष्ण ने पति मानी लीधा। मेरी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। मैं तो ऐसो भर को क्या भरूं, अरे आज जिए कल मर जाए। मैं तो ऐसे बर को भरूं कि मेरो ठंड चुड़लो अमर हो जाए। वो तो एवा धनी ने भरूं कि मारो चुड़लो कोई दिवस तूटे नहीं, मारा मारो अखंड चुड़लो अमर हो जाए।
मीराबाई तो मीराबाई है। क्या क्या मीराबाई ने भजनों में भी लिखा है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, 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 घुंघर घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ઘુંઘરો બાંધ મીરા નાચી છે। ભગવાનના નામમાં જે નાચે એને હરી મળે, પણ ઘણા તો નાચવામાં શરમાય। હા, ભગવાનની સામે નાચવું, ભગવાન માટે નાચવું, એના જેવું આ જગતમાં બીજો કોઈ નાચ નથી। પેલા તો તમે ઢોલની સામે નાચો છો એ તો તમારા બધાને તમે બતાવો છો, બાકી ભાગવત કથામાં તમે જો શર્મ મૂકી અને એસી કથામાં આપ જો મન મૂકી અને નાચો ને તો ખરેખર અંતર્યામી ભગવાન કૃષ્ણ તમારા ઉપર રાજી થશે। એક વખત ભગવાન માટે જે નાચે ને એના માટે નટવર એમ કહે છે કે રોજ હું નાચું, મને મારો ભક્ત જેમ નચાવે એમ હું નાચું, પણ શરત એટલી કે એક વખત તો ખુલ્લું મન રાખીને મારી સામે નાચ। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने भविष्य कथन किया है, हे धर्मराज, ये तुम्हारा पौत्र जो है वो दशरथी राम जेवा सत्संगी बनेगा, ब्रह्मण्य से शिबी समान शरणागत होगा, अयाति जैसे धार्मिक बनेगा, रंती जेव जैसा उदार होगा, नीतिवान क्षतिवान होगा, तुम्हारे वंश को ये उजागर करेगा, अश्वमेघ यज्ञ द्वारा भगवान का भजन करके परमात्मा की प्राप्ति करेगा। लेकिन हे धर्मराज, तुम्हारे पौत्र की एक हस्तरेखा में देखकर, यानी जन्म कुंडली में देखकर, उनका 8वां स्थान जो अष्टम स्थान है वो थोड़ा निर्बल है।
આને બ્રાહ્મણનો શ્રાપ લાગશે અને તક્ષક નગના દંશથી આને મરવું પડશે। धर्मराज युधिष्ठिर विचार करने लगे कि हमारे पांडव, हम पांडव है, हम कुल द्रोही नहीं है। हमारा वंश में आओ मानस ब्राह्मण ने शू भूल करशे। ब्राह्मणों आशीर्वाद आप्या छे कि महाराज तमारो बाळक जेम बने भगवान एने 100 वर्षनी उमर करे। राजा परीक्षित धीरे 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 हवे मोटा थवा लाग्या અને એ વખતે 100 વર્ષ પછી વિદુરજી યાત્રાએ निकल्या। 36 वर्ष हमने यात्रा करी। कौरवों ने पांडवों का जब युद्ध हुआ था तब विदुरजी वहां न था। यात्रा करवा गયેલા અને વિદુર કાકા પાછા આવ્યા। धर्मराज युधिष्ठिर उनका राज है અને વિદુર કાકા संत अभी पधार रहे हैं। संत ना होत संसार में तो जली जात ब्रह्मांड। विदुर जी गंगा ना किनारे मैत्रेय ऋषि ना आश्रम में एमणे संग करेलो, सत्संग करेलो। एमणे अनेक भागवत कथाओं श्रवण करेली। जब तुम यात्राए जाओ, तमे ज्यारे यात्राए जाओ ने त्यारे त्यां सारी सारी होटलो के उतारा न शोधशो। आपणे तो जेवा ज्यां यात्राए उतरीए गंगाजी में तो शुं करीए मुकेश भाई? सारी होटलो सारा उतारा शोधीए। नहीं मारा बाप, गंगा ना किनारे तो कोई तमे हरिनो दास शोधो, कोई भजनानंदी महापुरुष शोधो। અને જો કોઈ સાધુ પુરુષ જો મળી ગયો ને એનો જો સંગ મળી ગયો તો સમજો यात्रा તમારી સફળ થઈ જશે। यात्रा सफल हो जाएगी। लेकिन कई लोग तो शिकायत करते हैं हमको तो ये न मिला, ये न मिला, हम गंगा के किनारे आए हैं तो ये प्रॉब्लम हुआ। ये सब प्रॉब्लम छोड़ दो। हमारे ये जो ये आप खड़े हो जाओ दोनों, हमारे मुकेश भाई और नटू भाई आप दोनों खड़े हो जाओ। देखो ये दोनों जो है ना ये डिसा से आए हैं और मेरी कई कथा का आयोजन उन्होंने किया है छोटी उम्र में। गंगा के किनारे अभी मेरी कथा हुई थी तो उन्होंने बैठाई थी। अभी अयोध्या की कथा की तैयारी कर रहे हैं। हम भी आपको निमंत्रित जरूर करेंगे, आप पधारना और अपनी करतल ध्वनि से उसको आप थोड़ा स्वागत कर लो। वाह वाह वाह। और वो भी कहते हैं कि बापू गंगा के किनारे आए हैं तो वहां आप कथा श्रवण कराओ। और मैं लोगों को कथा श्रवण कराता हूं। यात्रा के लिए 4 वस्तु चाहिए तब यात्रा बनती है। देखना, ध्यान देना, यात्रा माटे 4 वस्तु चाहिए। एक तो संपत्ति पैसा, दूसरा समय, तीसरा तुम्हारा शरीर स्वास्थ्य, शरीर अच्छा होना चाहिए, और चौथा महत्व का जो है वो श्रद्धा। जो श्रद्धा न होए तो पछी आपणे एम कहेवाय फरवा गया था, पण जो श्रद्धा ने लईने जईए तो कहेवाय कि यात्रा करवा गया था। विदुर जी 36 वर्षे तीर्थ यात्रा करी अने हस्तिनापुर पाछा आव्या। कौरवोनो नाश थयो छे। युधिष्ठिर हस्तिनापुर गादी पर महाराज युधिष्ठिर विराजमान थया छे। धर्मराज युधिष्ठिरे विदुर काकाનું સ્વાગત કર્યું છે, પૂજન કર્યું છે। तीर्थ यात्रा का कितना महत्व है। अब तो मुझे लगता है थोड़ा महत्व कम हो रहा है। नहीं तो हमारा गामडाओमांथी ज्यारे कोई तीर्थ यात्राए जाए ने तो एना घरे बहनों बधी भेळे थई अने भजनो गाती, गीतो गाती गाती ने बहनों। तमे राजस्थान में हतुं ने एवुं? हैं बहनों बधी कोईना घरेथी कोई यात्रा करवा जाए तो तमे बधी बहनों भजनो करती ने घरे। हवे ए ओछुं थवा मांड्युं छे। कारण के पहला यात्रा एटली कठिन हती के पाछा आवे त्यारे आया, बाकी गया ए गया। અને હવે તો ખબર છે ફલાણા દિવસે જવાનું છે ને 25 તારીખે અમારી ટિકિટ પાછી કન્ફર્મ છે, અમે આવી જવાના છીએ, એટલે પછી જાજો ભાવ ન હોય।
पर पहले हम यात्रा के लिए जब जाते थे तब घर वाले सोचते थे कि आया तब आया, इतनी यात्रा कठिन थी। तो हमारे यात्रा करके जब लोग आते थे तो पहले भगवान शंकर का जहां मंदिर होते थे वहां उसको उतारा देते थे और पूरा गांव वाले स्वागत के लिए सामैया, ढोल, जाज, पखाज, अबील, गुलाल पूरा काफिला लेके जाते थे शिव मंदिर में बाप जी। और हमारे रूपनाथ बाप जी जैसे महात्मा विराजमान होते थे और सब यात्रावासियों को आशीर्वाद देते थे और बाद में स्वागत करके करके गीत मंगल गाते गाते उनको घर लेके जाते थे। तो आओ, हमारा गोला सनम की कथा में विदुर काका भी आ रहे हैं। तो विदुर काका यात्रा करके हमारी भागवत में आए हैं तो हम भी उनका स्वागत करें। आओ, गुजराती में भजन है, जो जिसको नाचना है वो नाचे, गाना है वो गावे। हम विदुर काका का स्वागत करते हैं। शेरी वड़ावी विदुर काका की यात्रा आ रही है तो मेरे बाप हम उनका सामैया स्वागत करें। थोड़ा सूर आपको श्री वड़ावी सजकनु घेरिया मुने श्री वड़ावी सजकनु करे आहा श्री वड़ावी सजकनु घेरिया करूं घेरिया मोने हासे वड़ावी सज करूं करे मोने। जय हो हरि बोल, राधे राधे श्री राधे। कानू घेरिया मोने घेरी
घेरी आवो ने शेरी वळावी सज करो घरे आवो ने शेरी वळावी सज करूं घेरी आवो ने शेरी वळावी सज करो घरे आवो ने वाह वाह विदुर काका का स्वागत तो हो गया। शेरी वळावी सज करो ने घरे आवो ने विदुर जी आए, सगली बात विदुर जी ने सुनाई। विदुर जी को बहुत दुख हुआ। कौरव और पांडवों का विनाश देखकर बहुत दुख हुआ। एक बार विदुर जी, ध्यान से अब सुनो, बैठ जाओ प्यारे, जो खड़े हैं वो पहले बैठ जाओ। भागवत कथा तो अभी चालू, 1 घंटा बाकी है, पहले बैठ जाओ। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम सीता राम हरि बोल सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 धृतराष्ट्र और गांधारी राजभवन में बैठे हैं, वहां विदुर काका जा रहे हैं।
अभी भी जो खड़े हैं वो कृपया बैठ जावे तो कथा आगे और मैं बढ़ाऊं। पीछे जो मेरी माताएं बहुत बैठी है, पुरुषों की जो पुरुष विभाग है ना वहां, तो उसको बोलो थोड़े आगे आ जाए। यहाँ बीच में बैठा दो आगे, उसको बोलो खड़े हो जाओ, इधर आगे आ जाओ, व्यास जी के आगे आ जाओ। माताओं को बोलो, माताओं जो पीछे बैठी है उसको बोलो इस गैलरी में आ जाओ, अभी मुझे कोई चलना बोलना नहीं है, आ जाओ आगे आ जाओ। पीछे तावड़ा भी आ रहा है, मैं देख रहा हूं, आगे आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। पहले मेरे बाप आगे आ जाओ, इधर जगह है, इधर इधर इधर। अरे सीधा नहीं चलना है, जो ये चलने वाली गैलरी है वहां से सीधा इधर लाओ, गैलरी कूद के आ जाओ। एक बार विदुर जी धृतराष्ट्र ने गांधारी ने एकांत में कहूं, हे धृतराष्ट्र, हे गांधारी, जे भीमसेन ना भोजन में झेर भेळवी अने एने मारी नाखवानी तमे कोशिश करी, ए भीमसेन ना हाथनो अन्नजल खाई अने तमने शरम नथी आवती? जे पांडवोने लाक्षागृह में बाळवानी तमे प्रयास कर्यो, जे पांडव पत्नी द्रौपदीनी भर समामा तमे आबरू लूटी, जे पांडवोने तमे वनमा मोकल्या, जे पांडवोनी साथे कुरुक्षेत्रना मैदानना युद्धमां तमारा संतानोनी साथे तमे लड्या, एज पांडवोना हाथनो रोटलो खाई अन तमने जीवता शर्म नहीं आती? कौन कहते हैं? विदुर जी। धृतराष्ट्र और गांधारी ने ठपको आप्यो। महाराज धृतराष्ट्र, आटली उमर थई, आटला आटला बधा मरी गया, जेने तमे मारवानो प्रयास कर्यो एना ज हाथनो तमे रोटलो खाईने जीवो छो, धिकार छे तमने तमारी जातने। आना करतो तो मरी जવું साરું। અને આટલી ઉંમર થઈ છે છતાંય તમને હજુ હરિ ભજન કરવાની ઈચ્છા નથી થતી? વિદુરજીએ કહ્યું કે ધૃતરાષ્ટ્ર, मैं तमने पहला ज कह્યું હતું કે दुर्योधन એ ભલે તમે કહો છો કે મારો દીકરો છે, એ दुर्योधन તમારો દીકરો નથી, दुर्योधन कलयुगનો अवतार છે। दुर्योधन कली का अवतार है। लेकिन मेरी बात आपने नहीं मानी। आपका बच्चा जो था धृतराष्ट्र, दुर्योधन की बात आप मानते ही रहे। मेरी बात नहीं मानी और दुर्योधन की बात मानी, तो दुर्योधन के कारण से देखो आज पूरा वंश खत्म हो गया। विदुर जी कह્યું હતું કે હે મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્ર, આ દુર્યોધન તમારા કળિયુગના રૂપમાં તમારા ઘરમાં અવતર્યો છે। પણ વિદુરની વાત અંતે ધૃતરાષ્ટ્રએ ન માની અને કુળનો નાશ થઈ ગયો। આજે વિદુર કહે છે કે હે ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી, હું તમારા કલ્યાણની વાત કરું છું મહારાજ। હવે તમે વનમાં જાઓ, હવે તમે हरि भजन करो। आते केवी जीजीविषा अन खरेखर घणाने घरमा पड़ेला जोईने एम थाय छे के अहींया शुं दाट्યું હશે। घरमांथी हाड हाड थતું હોય अन तोय माणस कथामांय न आवे। धन्य छे एनी सहनशीलताने, धन्य छे एनी सहनशीलताने। आम आम घरमां एम के हवे तो बापा કંઈક ગુડો, કંઈક મરો, પણ એ થાય? આહા, તને મળ્યો મનુષ્ય અવતાર માંડ કરી। મનુષ્ય અવતાર
कितनी भगवान की कृपा से मिला है। धृतराष्ट्र और गांधारी ने विदुर जी समझाते हैं कि आप भजन में जाओ। हाँ? तन्ने मळ्यो ए तन्ने मळ्यो मनुष्य अवतार मांड करीने तने मळ्यो मनुष्य अवतार मांड करीने ए तन्ने मळ्यो मनुष्य अवतार मांड करीने तने मळ्यो मनुष्य अवतार मांड करीने एमा भजा નથી रे भगवान हेत करीने एमा भजा नहीं रे भगवान हित करीने माटे खासो जमड़ानो मार पेट भरीने तेरी राम नाम संभार हरि बोल राधे राधे तन्ने मळ्यो मनुष्य अवतार मांड करीने तने मळ्यो मनुष्य अवतार मांड करीने एमा भजा નથી रे भगवान हेत धरीने एमा भजा नहीं रे भगवान हित करीने તેથી ખાસો જમડાનો માર પેટ ભરીને माते राम नाम संभार તેથી ખાસો જમડાનો માર પેટ ભરીને પણ આશા છૂટતી નહીં। समय जाए तो देह घसातो जाए। ध्यान देना, बहुत मजा आएगी। समय जब निकलता है तो देह घसाता है અને દેહ ઘસાય ને એમ આશા મજબૂત બનતી જાય બાપજી। દેહ ઘસાય એટલે આપણી જે આશા ને તૃષ્ણા છે ને એ વધતી જાય। માણસ જ્યારે 25 વર્ષનો થાય ત્યારે તૃષ્ણાબાઈ નો જન્મ થાય। ध्यान देना, गुजराती में समझाय છે। आमदी जब 25 साल का होता है तब तृष्णाबाई का जन्म होता है, और हम जब 50-60 के साल के हो जाते हैं तब तृष्णाबाई को भर जोबन आता है। આપણે જ્યારે 60 વર્ષના થઈએ ને ત્યારે તૃષ્ણાબાઈ ને ભર જુવાની આવે અને આપણે થઈ જઈએ ઘરડા અને એને પછી આવે જોબનવંતી ને પછી જુવાની। આહા, અને એ જુવાની જોબનવંતી જુવાની ઘડપણમાં પછી આપણને એવા હેરાન કરે, મોઢામાં દાંત ન હોય ને છતાંય આપણે છોકરાને કહીએ, છોકરા ગાંઠિયા લાવ, મારે ગાંઠિયા ખાવા છે। છોકરા કે ચવાશે નહીં, તો કે બાપા ચામાં બોળી બોળી ખાઈશ પણ મારે ખાવા છે। જેમ જેમ ઉંમર થાય ને એમ આશા ને તૃષ્ણા વધતી જાય। એટલે તો શંકરાચાર્ય મહારાજે બહુ સરસ લખ્યું છે, સરપટ પુંજરિકા સ્તોત્રમાં લખ્યું છે, અંગમ ગલિતમ પલિતમ મુંડમ દશન વિહીનમ જાતમ તુંડમ તદપિ ન મુંચતિ આસઃ પિંડમ
દળી ગયું હોય, માથાનું જે આ પતરું છે ધોળું થઈ ગયું હોય, મોઢામાં દાંત હોય નહીં, કેડમાંથી આમ વાંકા વળી ગયા હોઈએ, લાકડીના ટેકા વિના ચલાતું હોય નહીં, એવી પરિસ્થિતિમાં આશાનો પિંડ છૂટતો નથી. અને કેવી આશા? અગ્નિ વહને પૃષ્ઠે ભાનો રાત્રોચે ભૂખ સમર્પિત જાનો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓયન તલ ભીક્ષા કરું તલવાસા તદપી ન મુંચતી આશા પિંડા. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ 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 નમો ભગવતે વાસુદેવાય. અગ્નિમાં શેકાતો હોય, મોટો જટાધારી તપ કરતો હોય, તડકાની અંદર ચારે બાજુ ધૂણી દખાવીને બેઠો હોય, હાથની અંદર ભોજન લેતો હોય, એવા માણસની આશા અને તૃષ્ણા છોડતી નથી. અને આ તૃષ્ણાએ આ જીવને જન્મ અને મૃત્યુના ચક્કરમાં ફસાયો છે. પુનરપી જનની પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઇહ સંસારે ખલુ દોસ્તારે કૃપયા પાહી પાહી મુરારે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓહો ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મોઢમતે. ઓહો ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોટમતી. સંતોએ પોતાના મનને સમજાયું છે. આ જગતને ઉપદેશ દેવાની વાત નથી. હે જીવ, તું જરા વિચાર કર. જ્યાં સુધી આ ખોળિયામાં જીવ છે ને, ત્યાં સુધી માણસ કુશળતા પૂછે છે, સમાચાર પૂછે છે, સામા મળો તો પૂછે છે કેમ છો, મજામાં? તો આપણે કહીએ કે હા. પણ આ શરીરમાંથી એક વખત પ્રાણ નીકળી જાય, આ શરીરમાંથી એક વખત પ્રાણ નીકળી જાય, તો પછી કોઈ કહે છે કે કેમ છો, કેમ સુતા છો, કોઈ પૂછે છે? કોઈ નહીં પૂછેગા. અરે થોડી વાર માટે જેની પત્ની નાથ નાથ કહીને બોલાવતી હતી, એ પણ એ શરીરથી પછી તો ડરવા માંડશે. પ્રિયમ ગીતા નામ સહસ્રમ ધેયસે પતિ રૂપમ ચંજામ. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ધેયમ ગીતા નામ સહસ્રમ ધેય શ્રીપતિ રૂપમ રાજામ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.
પત્ની પણ ડરે. વિચાર્યો નહીં લઘુ વયમાં પછી વિદ્યા ભણ્યાથી શું, અને આ મળી દુનિયામાં બદનામી પછી નાસી ગયાથી શું. અને એક પાપ કર્યા અને પછી કાશી જઈ અને ગંગામાં નાહીએ તો એ શું. હવે તો હે જીવ આ બધું છોડી દે. ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂઢ મતે. 60 વર્ષ સુધી આપણી જે આ જીવનની ગાડી છે ને, 60 કે 70 વર્ષ સુધી આ જીવનની ગાડી હાઈવે ઉપર ચાલે, હાઈવે ઉપર જતી હોય. પછી આગળ જઈએ ને એટલે બે આમ ફોંટા પડે, એક હાય હાય તરફ અને બીજો હરી હરી તરફ. આપણે કયા રસ્તે ગાડી વાળવાની એ આપણે નક્કી કરવાનું મારા બાપ. હે આ જીવન રૂપી નૌકા, આ જીવન રૂપી ગાડી 60-70 વર્ષ સુધી સંસારના પાટા ઉપર આમ હરખી ચાલી જાય, પણ પછી જ્યાં બરાબર ઉંમર પાકે ને એટલે આગળ બે ફોંટા આવે બાપજી. એક હરી હરી તરફ ને બીજો હાય હાય તરફ. માણસને કયા રસ્તે જાવું ને એ આપણે નક્કી કરવાનું. જો હરી તરફ વળી ગઈ તો સમજો બેડો પાર, પણ જો હાય હાય તરફ વળી ગઈ તો ન આપણે સુખેથી જીવી શકશું અને નહીં બીજાને સુખેથી જીવા દઈએ. हे धृतराष्ट्र, तुम्हारी कैसी है जिजीविषा? सबको थोड़ी थोड़ी ममता तो सबको होती है मेरे बाप, पर ममता मरती नहीं है. मारी ममता मरे नहीं एनु मारे शू करવું? अरे जाओ गुरुजी ने पास, एवा कोई गुरु रे મળે. गुरु મળે ત્યારે રસ્તો મળે બાપ. હે ધૃતરાષ્ટ્ર, હજી તમને ભગવત ભજન કરવાનું મન નથી થતું. હે જીવ જરા ચેત. આયુર્નશ્યતિ પશ્યતામ પ્રતિદિનમ યાતિ ક્ષયમ યૌવનમ પ્રત્યાયાન્તિ ગતઃ પુનર્દિવસઃ કાલો જગદ ભક્ષક. પ્રત્યેક પળે આયુષ્યનો નાશ થાય છે. ફૂટા હુઆ જો ઘડા, ફૂટેલો ઘડો અને એમાંથી પાણી જેમ ટપક્યા કરે એમ પ્રત્યેક પળની અંદર આપણે મૃત્યુની નજીક ધીરે 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 જઈએ છીએ. એક વૃદ્ધ બાપા લાકડીના ટેકે ટેકે આમ જતા હતા. એમાં એક યુવાને મસ્કરી કરી. બાપાને પૂછ્યું કે દાદા, તમારું શું ખોવાઈ ગયું છે એટલે તમે આમ વાંકા વળી અને કંઈક શોધો છો, કંઈક ગોતો છો? દાદા સમજી ગયા કે જુવાને મારી મસ્કરી કરી છે, કારણ કે મારી ઉંમર થઈ છે 80 વર્ષની, હું વાંકો વળી ગયો, મારાથી સીધું ચલાતું નથી. એટલે જુવાને કીધું કે દાદા કઉં ખોવાઈ ગયું હે તો તે ગોતો હો. દાદા કે ભાઈ ગોતતો કોઈ નહીં દીકરા, તારી જેમ મારી પાસે જવાની હતી અને જવાની ખોવાઈ ગઈ છે, હું શોધું છું. માટે દીકરા સાચવજે, જવાની એ જવાની. પિંપળ પાન ખરતા હસ્તી કુંપળિયા, મુજ તુજ વિત છે ધીરી રહો બાપુડિયા. પિંપળના પાન પીળા હુઆ, નવી જો પિંપળ ફૂટીને એ પિંપળીઓ હસે છે. પેલા પાકેલા પાનને કહે છે કે તમારી દશા તો જુઓ કેવી, અમે તાજી માજી છીએ. ત્યારે પાકા પાને કહ્યું કે ધીરા રહો બાપુડિયા, અમને જેવું વીત્યું એવું તમને વીતશે. ગયેલા દિવસો પાછા આવતા નથી. ધનુષમાંથી છૂટેલું બાણ, મોઢામાંથી નીકળેલું વેણ, ગયેલો સમય કોઈ દિવસ પાછો આવતો નથી. એકવાર આંખમાંથી આંસુ જો નીકળી જાય તો એ પણ પાછા આવતા નથી. લક્ષ્મી સ્તોય તરંગ ભંગ ચપલાવ વિદ્યુત ચલમ જીવિતમ.
તસ્માન મામ શરણાગતમ શરણદત્વમ રક્ષ રક્ષાધુના. પાણીમાં ઉઠતા તરંગોની જેમ લક્ષ્મી પણ ચંચળ છે, આવે અને જાય. ધૂપ છાંવ જીવન વીજળીના ચમકારા જેવું ક્ષણિક છે મેરે બાપ. આકાશમાં વીજળીનો ચમકાર એ છે ઘડી કે બે ઘડી, એમ જીવન તારું જાણજે એ છે ઘડી કે બે ઘડી. એટલે હે પ્રભુ मैं तुम्हारे शरण आया हूं. વીજળીના ચમકારા જેવું એક ક્ષણિક જીવન છે મારા બાપ, એમાં એ સાધ્ય કરી લેવાનું. અલ્પ સમય શાસ્ત્રો ને સંતો એમ કહે છે કે દિવસમાં 21,600 શ્વાસ લેવાના હોય. કતરા? 21,600 શ્વાસા. कब पूरा हो जावे किसी को मालूम नहीं है मेरे बाप. અને એટલે તો અમારે ગુજરાતીમાં ગામડાની એક નારી એને બહુ સરસ ભજનમાં ગાયું કે હરખને શોકની જેને હેડકી નહીં આવે પાનબાઈ, એ જી આઠે પહોર રેવે આનંદ. વીજળીના ચમકારે મોતીડા ભરો પાનબાઈ, અચાનક અંધારા થાશે. अचानक अंधारा यानी अचानक ये जीव कब निकल जाएगा किसी को मालूम नहीं. और इसलिए संतों ने गाया है बेड़ी ने मालिया मंदिरिया ये तो માળિયા મંદિરિયા તો, बेड़ी ने मालिया मंदिरिया ये तो, માળિયા મંદિરિયા તો, माया मतलब की है भाई, મતલબ કે धन जो बन तेरो आवे न जावे, ધન રે જો બન તારો આવે ન જાવે, धन जो बन तेरो आवे न जावे, ધન જો બન તારો આવે ન જાવે, छाया बादल की मेरे राम पर नहीं पालकी, अरे मूर्ख बात करे कल